nestled between Khasi and Jaintia hills, Shillong was the capital of British-created Assam till 1972. The hill station is now the capital city of Meghalaya, or the land of clouds. Rain is a permanent existence in this city, and so is music. It is the rock capital of northeast India. But in the last 2 days of May and the first week of June, Shillong reverberates with the sound booths of patrolling armed forces. There's a curfew imposed in its heart. The city tries to limp back to normalcy when the curfew is withdrawn or relaxed for a few hours. And then again the streets wear the deserted eerie silence that the curfew brings in its wake. On the 30th of May, one of the women from the Punjabi line was filling up her bucket of water when an altercation with the bus driver sparked a row that got Shillong boiling for a week. मैंने बस वाले को 2 बार बोला नुकसत ने आगे चला जाओ 2 बार बोला नहीं गए वो गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और गंदी गंदी बात बोल रहे थे तो फिर मेरी भाभी ने बोला ये क्या बोल रहे हैं मैंने बोला मुझे खासी नहीं समझ आती तो मैं पूछने गई फिर भी हिम्मत करके और उसने डायरेक्ट मुझे लात उठाई तो फिर मैं रिमूव हो गई तो मैंने 1-2 थप्पड़ मारा ड्राइवर को जो साथ में हैंडीमैन था उसको धक्का धुक्की लग गया होगा शायद उसका सिर पर चोट लग गई तो फिर मैं पुलिस स्टेशन गई कॉन्फर्माइज हुई 4000 मैंने दिए उसको. A hurried compromise drawn between the communities hardly lived the test of that night. Violence broke out as a group of local Khasi men tried to walk through the Punjabi lane or Themliu Malong. The episode soon became a case study of how dormant social tensions can be lit up by rumour mongering. What played a key role in escalating a hyper-local incident into a widespread law and order problem was the fake news that a Khasi youth had been killed in the Punjabi lane. Later, ironically, what helped spread the clashes were rabble-rousing videos of the clashes. 1st June morning, the government imposed curfew. In the days that followed, both communities hurled stones at each other, literally and otherwise. Even as there is curfew imposed in various parts of Shillong, there are protesters from the Khasi community who are there on the streets in various parts of the city. I'm in the Ludo area where you see heavy police deployment, including central paramilitary forces, the state forces, almost everyone deployed with all kinds of barricades that can be placed, including tear gas and also enough bulletproof jackets, visors, helmets and everything being arranged. And there you see the protesters. इस कल वाली जो पथराव में हमारे CRPF के 2-3 जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं तो उनका इलाज उसी समय करा दिया गया है. वो सभी अभी खतरे के बाहर है और हम लोग भी अपने तरफ से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सारे कदम उठाएं. मैं एक बार फिर आपके जरिए पब्लिक से मैं अनुरोध करता हूं, कृपया करके कानून को अपने हाथ में मत उठाइए. जो कानून के उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाएगा. In the middle of this violent story and hatred is 3 acres of land that the Punjabis live in. Right beside the bourgeoning Bara Bazaar of Shillong, this piece of land when the British brought them to live and serve the growing city of Shillong. They were manual sanitation labourers. Bara Bazaar is the hub of commercial activities of not only Shillong but the entire state. Urbanization has ensured that the city and its marketplace is growing beyond its previous limits. Soon, Themliu Malong that used to be on the outskirts stood as an obstacle in the middle of the commercial growth of the city. Talks started to make way for relocating these migrant Punjabi colony from here to the new outskirts of Shillong. अभी जो हमारा फोकस यहाँ पे यही है कि एक शांति का एक माहौल होना चाहिए.
हमारा यही फोकस है कि जो यहाँ पे जो गलत फैमिलियाँ हैं हमारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, वो क्लियर होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, हम लोग सबको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे इस सोल्यूशंस को हम लोग एक जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशंस हम लोग आगे निकालेंगे। The Punjabi community has been fighting against the relocation for over a decade now. The land is of the valuation ranging between 35 to 40 crores, going by the current market price. The migrant Punjabi community side old ties of ancestors to hang on to the land that was once given to them by the king of Meghalaya. The Punjabi community had presented a letter grant of land for permanent settlement in 2008 to the Meghalaya State Electricity Board chairman. The letter said that the land was given to Dalits from Punjab after an agreement between the Raja of Meghalaya and the British administration was reached. The pact was signed on December 10, 1863. This means that the Dalit Sikhs have lived in Shillong's Punjabi lane for over 150 years. हम लोग जो 1853 से पहले से हम लोग यहाँ पे हैं, और सीएम ऑफ मिलियम जो यहाँ का जो राजा है उसने ये जो ज़मीन है हमारे सिख कम्युनिटी को दिया हुआ है। इसलिए हमारे जो गुरुद्वारा, टेम्पल्स, स्कूल्स, चर्च वगैरह यहाँ पे हम लोगों के जो बुजुर्ग थे उन्होंने स्थापित किया है। और जो सीएम ऑफ मिलियम है वो इसको आज भी रिकॉग्नाइज करता है। देखिए, ज़मीन का तो हमारे 200 साल हो गए, 200 साल हो गए। हमारे दादाजी हमारे उनसे भी पहले जो थे वहाँ ही एक्सपायर हुए हैं। अगर हमें छोड़ना भी पड़ा तो हम तो जान छोड़ेंगे, ज़मीन तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे बीवी बच्चे जो भी है वहाँ पे ऐसे हालात हैं ना, दरवाज़ा जब खोलते हैं ना, दरवाजे की आवाज़ सुन के वो काँप जाते हैं। जितनी बार भी यहाँ पे इवेक्शन नोटिस आया, हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में जजमेंट दिया। जब यहाँ पे आग लग गई थी तो उस टाइम में तकरीबन 200 फैमिली बेघर हुई थी। फिर उस टाइम में भी इस तरह के दंगे हुए थे हमें यहाँ से हटाने के लिए। उस टाइम में फिर हाई कोर्ट के जो जो जस्टिस थे पीके घोष साहब, उन्होंने आके यहाँ पे देख के फिर हमारे फेवर में जजमेंट दिया था। और हमारे जो बाकी लोग थे फिर हमने रिकंस्ट्रक्शन किए थे हमारे घर। All 300 Punjabi families with around 1200 voters have taken shelter in the Gurdwara built on top of the school in the neighborhood. While women take turns in the day to cook for the community, men stand guard. With curfew imposed for indefinite period, there is no work to go to. हम लोगों को टेंशन है ये जो खासी पीपल है फिर से ना हम लोगों पर अटैक कर दे जैसे उस दिन किया था। इसलिए यहाँ पर हम लोग लड़के लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं, पुलिस के साथ उनका साथ दे रहे हैं। ये उनके लिए बन रहा है जो हमारी हिफाजत के लिए लड़के लोग ना यहाँ पे अपनी माँ बहन बच्चों के लिए यहाँ पे अपने घर नहीं जा रहे, यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं ना, इसलिए उनके लिए बना रहा है। वो भूखे पेट तो नहीं काम कर सकते ना, रात रात भर जाग के। 64-year-old Billu Singh used to work in Shillong Municipal Corporation as a peon before he retired. He was the first member of his family to work in any position in the corporation other than as a sanitation worker. He has witnessed and supported Meghalaya's struggle for separate statehood in the 70s. Till 1970, when it was given semi-autonomous state identity, Shillong and Meghalaya were parts of Assam. Like his forefathers, who were part of manual sanitation labour community of the city, he too was born and brought up in this city, loving it as his home. कई बार ऐसा छोटा मोटा जब 69 में गंडगोल हुआ था स्टेट का लेने का ऊपर, तो 1 साल 6 महीना चला, इनको स्टेट मिल गई। फिर 70 में स्टेट मिल गया, आसाम वाले चले गए, मेघालय हो गई। मेघालय का 72 में पहला इलेक्शन हुआ, उस टाइम में भी ठीक ठाक ही है। फिर भी गंडगोल ख़त्म हो गई, हम लोग आराम से यहीं रह रहे हैं। हमें कोई सरकार से
यहाँ का लोकेलिटी वाला जो रहता है उन्होंने हमको कभी आज तक कुछ नहीं किया, और हमारा तरफ से भी कोई उनसे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई सी बात का कोई गुस्सा, ये नाराज़गी वाला बात नहीं। Unlike Billu Singh, Lakka Singh continues to serve in the army with a special appointment after his retirement at the age of 66. He and his brother grew up in this city with their Khasi friends, but they were never worried about their identity as a resident of a Harijan colony. वो तो बहुत पुराने, हम लोग का बाप दादा तो ब्रिटिश का टाइम से रह रहे हैं इधर, तो उसके बाद में पिताजी था इधर, फिर हम लोग को भी यहाँ आने पड़ा क्योंकि नौकरी पीछे नहीं था कुछ, तो परिवार बढ़ गया तो फिर खर्चे तो बढ़ते ही हैं। Lakka Singh's brother is no more. He is the patriarch of the family. A relocation for both Lakka Singh and Billu Singh's family and all other Punjabis would entail escalation of cost and a struggle to survive. सरकार तो तभी हमारा जगह में कब्जा कर सकता है जब हमको ख़त्म कर देंगे। 200 साल पुराना बैठा हुआ आदमी आज बोलेगा, सरकार बोलेगा आप उठ जाओ, आज सरकार हमको दूसरा जगह में बैठा देगी तो वह 10 साल बाद में, 20 साल बाद में फिर बोलेगी आप यहाँ से जाइए। जिस टाइम ये जगह में हम लोग बैठा था, ये जंगल बियाबान जंगल था, जानवर शेर बाघ निकलते थे। आज ये जगह मेन सिटी हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तो आज इन लोग को नज़र में आता है कि हम लोग मेन सिटी का सीना पर बैठे हैं। यही उनको खटकता है कि हम लोग मेन सिटी के अंदर में बैठे हैं। भाई तो गुजर गया, उनका परिवार मेरे साथ रहता, उनके 5 बच्चे थे, मेरे 3 हैं, उनको भी मैं देख रहा हूँ, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग को इधर गुजारा कर रहे हैं। अगर हम दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो हम लोग को तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बच्चा का पढ़ाई स्कूल दूर जाना का। But more than that, it would define a defeat and a loss of identity for them as a cohesive member of the Shillong community. क्योंकि बाहर ये इंडियन टेरिटरी में है और आर्टिकल 19D में ये लिखा हुआ है कि जो इंडियन सिटीजन है ना, वो इंडियन टेरिटरी में कोई जगह में भी रह सकता है। हम करीब 200 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और आज ये कहते हैं कि इन लोगों को निकाल दीजिए। हमारे पास इस लोकेलिटी की स्टे ऑर्डर भी है गवर्नमेंट से, तो ये आज सोचिए, हम तो सिक्योर नहीं मानते अपने आप को। अगर आज वहाँ से आर्मी हटती है तो कल को अगर वो क्या हमारे अंदर नहीं घुसेगी लोकेलिटी में, वो आज भी चाह रहे हैं कि घुसेंगे। रात में भी CRPF को उसने पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पे TR गैस चले हैं, वो क्या कर लिए। अगर उन लोग की बात हो गई है तो ये सब क्यों हो रहा है वहाँ पर आज भी। The Punjabi lane itself appears frozen in time. It's a congested cluster of wooden houses with tin roofs and a road running through it. A bus blocking a water tap on this road that sparked off the clash, leading to the violence, might seem like too insignificant a situation for what followed. But the locals have a different justification. We demand the government should vacate all the Harijan person who stay there from that colony. We want that only. We want nothing. We don't want any troubleness that gonna harm to those people, but we want only to vacate from them because that Harijan is not belong to them. That only. Though locals claim that the colony is the hub of criminal activities, Harijan Lane residents deny them vehemently. ज़मीन का तो हमें 200 साल हो गए, 200 साल हो गए। हमारे दादाजी हमारे उनसे भी पहले जो थे वहाँ ही एक्सपायर हुए हैं। अगर हमें छोड़ना भी पड़ा तो हम तो जान छोड़ेंगे। The colony is also struggling to rid itself of the tag of Sweepers Lane that remains attached to it. Community members say that they have moved on and that youngsters no longer want to do the jobs that their forefathers did. In the process, they are stepping in the toes of the locals for their livelihoods.
That partially substantiates the Khasi community's claim that the patch of land was given to municipal corporation workers, and as they no longer work for it, they have to vacate the patch. That place has been given by the Shillong Municipal Board only to those employees of the Shillong Municipal Board, and they are living there as quarters. So if you are living in a government quarter, after you're retiring, then you have to leave that quarter. But those people are residing there, and they are even renting out shops and places to stay, which is illegal. The city of Shillong has seen massive development in past few decades. The development has not only been vertical, but also in expanse too. Given the consideration of the land crunch that the entire city and the region has been facing, it would be one of the toughest tasks on a relocation that is possible or not is yet to be decided by the government. Even though the Minority Commission has clearly voiced its concern on any kind of relocation in the future, for the Meghalaya government, there are many challenges ahead. Sikhs are not the only migrant community that came to Shillong to make it their own. Because of its location and weather and connection to British Raj, it was one of the most cosmopolitan cities of the East after Kolkata. Partition caused Hindu and Bengalis to migrate and take shelter in Shillong. The influx of refugees and the rise of tribal identities started creating fissures in the cosmopolitan culture of Shillong. The first major riots in Shillong in 1979 by the Khasi mobs were directed mainly against the local Bengali community and aimed to drive them out. Riots continued sporadically through the 1980s. In 1987, there were curfews for a whole year. Those were dark days in Shillong's life as a city. All outsiders, locally referred to as Khars in the Khasi language, were targets. The violence against outsiders continued into the 1990s with houses burnt and people murdered and raped. Entire Bengali and Nepali populations were ethnically cleansed out and became internal refugees. Most of the Bengalis moved to West Bengal or the Barak Valley of Assam. The Nepalis migrated to places such as Darjeeling. Marwari and Sindhi businessmen became targets of extortion by militant groups. Some fled to safer places. As militancy was stemmed, things started to change in Shillong in the first decade of the new century. For at least the past 3 decades, sections of Shillong society and political organizations have been demanding that residents of Punjabi Lane be settled in some other area. The primary argument being that a prime commercial area shouldn't hold a residential locality. There have been brawls earlier too between residents and Khasis passing through the area. The current clash garnered support for Punjabi Lane residents from Sikh organizations in India and abroad. मैं सिखों को आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग को इसके बारे में पता लगा, हमारे पार्टी श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सुखबीर सिंह बादल ने इमीडिएटली एक टीम रवाना करी, जहां हमारे प्रधान डीजीएमसी के दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और उनके साथ हमारे दूसरे मेंबर्स गए। वहां जाके उन्होंने गुरुद्वारा में जाके सारे सिखों से मुलाकात करी, बातचीत करी। उसके बाद उधर के मुख्यमंत्री से भी मिले, मुलाकात करी और वापस आके उन्होंने हमें कल ये बताया कि किसी सिख के जान का नुकसान नहीं हुआ, उनके बिजनेस का या मकान का भी नुकसान नहीं हुआ और मुख्यमंत्री ने अश्योर किया है कि वो पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि सिख बिल्कुल सेफ हैं और किसी तरह का नुकसान ना हो। तो हम लोग सैटिस्फाइड हैं। Well, you know, this problem is a very long pending problem, I should say, where government to government, one government after another government, they could not solve it. And this time, this MDA government, what we are trying to do is, we would like to solve it permanently. Okay, we need to have a solution on this, and I'm sure through this committee, high-level committee that we have, we'll be able to recommend to the government, to the cabinet,
for feasible, maybe feasible recommendation, where ultimately everybody should be also happy with that. This has scarred Shillong to the extent that it would be difficult to weave it back to its previous cosmopolitan culture. While the outside world and mainland India brands Shillong as xenophobic, the real story of how land, its occupancy, lack of modern town planning and power politics failed Shillong and its people would blur but not vanish. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you would love to.